In this example, Z ये जो लिया है, that is from the previous example, which is essentially, again, it was for ammonia only. We had seen that example 2, 9.2 for ammonia, and Z was given as minus nu of nitrogen, which is limiting reactant, into epsilon divided by n of nitrogen at n to 0. What does it mean? Okay, इसे कुछ पता नहीं है. So if you look at this formula 9.5, that will tell you exactly what we want. Z is equal to epsilon divided by Ni0, that is at times 0. What are the number of moles of limiting reactant divided by nu of I, absolute value of nu of I. Okay. So if you want to find the conversion of nitrogen to ammonia in this case, what we need to find is epsilon, nu I and Ni0. Right? How will you find that thing? K का value दिया है हमारे को, right? K is given as 2 into 10 to the power of minus 4. So we can use this equation, Ky is equal to K upon K phi into P raised to the power of minus nu, and find out what is the value of epsilon. Once you find the value of epsilon, you can find what is the value of Z. समझ में आया लोगों को? How will you find the value of, what is the value of Ky? What is Ky equal to? What is Ky equal to? सो रहे क्या लोग सब? What is Ky equal to? Dikshita? Hello? Can you hear me or not? Product of the mole fractions. What is Ky? What is the definition of Ky? Product of all mole fractions to the power stoichiometric coefficient. Yeah, pi of yi to the power of nu I. Right? आज आपका टेस्ट है, आपको कुछ पता नहीं है. कैसे करोगे टेस्ट मेरे को पता नहीं. I just don't know. It's basic formulas, you should remember all these things. If you don't remember, then there's a problem. I know घर पे बैठ के कर रहे हो, कॉपिंग कर सकते हो, but at least basic तो याद रहना चाहिए ना. Don't remember the basics, then how are you going to proceed? इसमें क्या हो जाएगा? What will be Ky equal to? In this case, in this reaction, N2 plus 3H2 gives 2NH3. What will be Ky equal to? खुशी? नहीं पता. सो रहा है. No response means sleeping. Nitin? Yes, sir. Yeah, what is Ky equal to for this reaction? प्रियंका? अब सो रहे हैं. प्रवीण साठे?
Yes, sir. अटेंडेंस नहीं है, ये आंसर चाहिए मेरे को. व्हाट इज के वाई इक्वल टू? शिवानी. सर वो वैल्यूज डाल के बोल मेरे को फॉर्मूला बताओ ना. व्हाट इज के वाई इक्वल टू? हाउ डू यू ट्रांसलेट दिस फॉर अमोनिया, this reaction? N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. तो म्यू आई की वैल्यू डालें. What is nu I? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ. Nu I is nu for I. What is nu I for this reaction? The mole fraction of ammonia raised to 2. Y ammonia raised to power of 2. Or what else? Divide by mole fraction of nitrogen. And divide by mole fraction of hydrogen raised to 3. Divided by mole fraction Right? and So this is Y ammonia raised to 2 divided by Y hydrogen raised to power of 1 and divided by Y hydrogen raised to power of 3. Right? So now we need to find out. यहाँ से हमारे को K दिया है. What is K phi equal to? What is the value of K phi? We have assumed 1. equal to 1. Ideal gas लेते हैं हम, right? So we know K phi, we know K. प्रेशर पता है हमारे को, राइट? प्रेशर दिया है ए पार्ट में 20 बार. तो प्रेशर पता है हमारे को. न्यू का वैल्यू क्या रहेगा? व्हाट इज न्यू फॉर दिस रिएक्शन? -2. -2. So 2 minus 1 minus 3 is -2. So we know everything here, right? So if you can write this in terms of epsilon. So how do you write this in terms of epsilon? Because ultimately we want to find epsilon, right? यहाँ पर हमारे को ये पता है. What is this thing? Ni0 क्या है? What is the value of Ni0? What is the value of Ni0? Hmm? What is the value of Ni0? Sir, 4. 4. 4 क्यों होगा? Why it will be 4? Hmm? सर वो अमोनिया के लिए 0 होगा ना? Ni0. Ni0 is what? It's initial number of moles present. इसका Initially number of moles. नहीं, initial number of moles ठीक है. Ni0 is initial number of moles. For which component? Which component? Hmm? सर जो लिमिटिंग लिया है वो. Right. तो इसमें क्या दिया हमारे को? What is the तो सबका एडिशन लेते हैं ना. conversion of nitrogen बोला है ना? बराबर ना? तो he is हाँ specifying determine percent conversion of nitrogen. That means limiting component, limiting reactant we take as nitrogen only, right? तो Na0 क्या हो जाएगा हमारे केस में? 1 होगा ना? Right. So we have defined a basis. Don't forget PC. Always basis. Basis is we are saying stoichiometry. That means 1 mole of nitrogen plus 3 moles of hydrogen. वो दिया उसने, right? He has already specified that we are giving feed in stoichiometric ratio. That means 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen. That is our basis.
Without basis nothing can be solved, right? So ni0 क्या हो जाएगा? One. ni0 and using ni0 क्या हो जाएगा? N of nitrogen at 0 time, that is equal to 1, because that's what is specified. ठीक है? Is this okay? Yes, sir. And nu I क्या हो जाएगा? Nu of nitrogen, that is what equal to क्या हो जाएगा? -1. -1, right? So now if you take this equation, we know mu I, we know ni0, we need to find epsilon. Then we can find what is the conversion, which is z. How will you find epsilon? Because now we know what is ky, so we know ky. So now we need to write this thing in terms of epsilon and solve it, right? So how do you write y ammonia, y nitrogen, y hydrogen in terms of epsilon? क्या हो जाएगा for this reaction? What is the formula for y in terms of epsilon? नहीं याद किसी को? Sir, ni0 plus summation of mu ij into epsilon ij by n0 plus summation of mu I into epsilon I. When you talk about y ammonia, this y, that is n of ammonia divided by total n, right? बराबर है? Yes, sir. Right? So now we need to see what is n of ammonia and what is n total n. बराबर? So what is n of ammonia at any time? ये फॉर्मूला आपको याद रहना है, फॉर्मूला कुछ याद नहीं है. So y is equal to ni0 plus y into epsilon upon n0 plus epsilon into nu. Okay, so y ammonia क्या हो जाएगा? What is ni0 for ammonia? Hmm? 0. 0 plus nu I for ammonia? 2. Into epsilon. Epsilon का वैल्यू पता नहीं हमारे को, राइट? n0 क्या रहेगा? What is n0?
1. N0 is total number of initial moles. N0 क्या होगा? 4 होगा ना सर? Plus epsilon into nu. Nu is what? -2. Right? That is -2. 2 minus 1 minus 3 is equal to -2. Right? So it is 2 epsilon upon 4 minus 2 epsilon. ठीक है, समझ में आया लोगों को? Any doubts, questions? ठीक है, and then what is Y nitrogen? Y nitrogen क्या होगा? What is Y nitrogen? What 1 is minus epsilon divided by 4 minus 2 epsilon. 1 minus epsilon upon 4 minus 2 epsilon. Denominator हरदम same रहता है. Denominator does not change, so we need not worry about denominator. Numerator देखो तो हो जाएगा. Y hydrogen 3 minus 3 epsilon divided by 4 minus 2 epsilon. 3 minus 3 epsilon upon 4 minus 2 epsilon. ठीक है? So now you can substitute these values in this equation. You can substitute for y in this equation. We know all the values. We can find out ky from this equation and then find out value of epsilon. So do that now. Substitute k, k5, p, nu, find out k value. First find out the value of ky. Then substitute in this equation and substitute for y and find value of epsilon. ठीक है? समझ में आया लोगों को? Let me know what is the value of ky. Okay? करो फटाफट. First find out what is the value of ky. Substitute for k value is given. K is 2 into 10 raised to the power of -4. ये value दिया हुआ है. And pressure is 20 bar. So find out what is the value of ky. In terms of P. Pressure करना डालो value because we need to do same calculations for B part also where pressure will change. So let's write in terms of pressure first. Equation going to remain the same, only pressure is going to change in A part and B part. So what will this be equal to? सर Yeah. सर वो हमने इनिशियल मोल जब निकाले तो बस N2 का लिया था ना 1 मोल बेसिस करके, और फिर YH2 निकालते वक्त फिर हम इनिशियल H2 के मोल्स 3 क्यों ले रहे हैं? 0 लेना चाहिए ना. ये अमोनियम नाइट्रोजन के लिए 1 लिया है, हाइड्रोजन के लिए 3 लिया ना. हाँ तो वहाँ पे 0 लेना चाहिए ना इनिशियल. नहीं हाइड्रोजन इज नॉट 0. हमारे बेसिस क्या है?
1 mole of nitrogen plus 3 moles of hydrogen. फिर सर आवाज कट रहा है आपका शिवानी. कैन यू रिपीट? सर वहाँ पे Ni0 जो है ना, तो फिर वहाँ पे +3 भी करना चाहिए ना टोटल करके, H2 का भी लेंगे ना 1 + 3. इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, मतलब वहाँ पे अगर स्टार्टिंग में नहीं ले रहे तो फिर यहाँ पे 0 लेना चाहिए ना H2. मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन आपका. सर हमने बेसिस में 1 मोल N2 + 3 मोल्स H2 लिए है ना. राइट. हाँ, तो फिर स्टार्टिंग में हमने इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स लेते वक्त NH. उसके साथ तो हाइड्रोजन भी फिर है. हाँ, तो फिर वहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं ऐड? नहीं नहीं नहीं, सी यहाँ पर जो रहेगा ना, यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है ये. दिस इज हाँ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन. तो हमने 4 लिया यहाँ पर. ठीक है. बट हाँ, व्हेन यू तो टॉक फिर अबाउट Ni. अच्छा, फिर Ni0 बस नाइट्रोजन के लिए, इसलिए वो 1 लिया है. Ni is for that component only, right? We are talking about, see, when you say ये फॉर्मूला देखो, Ni means मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट I. ये कैलकुलेट करना है तो हमारे को समेशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ I डिवाइड बाय टोटल मोल्स. हाँ सर. राइट. So moles of I is what? Initial moles of I, Ni0 plus nu I into epsilon. बराबर. हाँ सर. अच्छा, हाँ. Ni0 is 3, राइट. और एप्सिलॉन -3 है हाइड्रोजन के लिए. Sorry, nu I is -3 for hydrogen and epsilon. So -3 into epsilon. समझ. 3 -3 epsilon because his -3 है ना. Is -3 for hydrogen. So we are talking about numerator में always वो component का आएगा moles. Denominator is total moles. Total moles कभी change नहीं होगा. That's why you are not changing anything in the denominator. Only numerator will change depending on कितना reaction हुआ, क्या हुआ, या stoichiometry क्या है. ठीक है, समझ में आया? हाँ सर. So what is ky equal to? K is 2 into 10 raised to the power of -4 into p raised to the power of -2. -2 आएगा, क्या आएगा? Is this correct? ये करेक्ट लिखा है मैंने. No, sir. +2. करेक्ट है. न्यू का वैल्यू क्या है? सर +2 होना चाहिए. -++. +2 आना चाहिए. रिमेंबर दैट, राइट. बिकॉज इट इज माइनस न्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p raised to the power of 2 आ जाएगा, राइट. So that is the value of ky, and this is going to be remain same. So ky is equal to 2 into 10 raised to the power of -4 p square. Right. So this is one equation. Second equation is ky equal to y of nitrogen, ammonia, sorry, 2 epsilon upon 4 minus 2 epsilon whole square. That is y ammonia square, right? कहाँ गया वो? Yeah, y ammonia square upon y nitrogen and y hydrogen cube to 1 is 1 minus epsilon upon 4 minus 2 epsilon into 1 upon हाइड्रोजन का क्यूब.
ठीक है, समझ में आया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2? Yes, sir. Right, so now we can simplify this, and what we'll get is 2 epsilon whole square, that means 4 epsilon square. और ये ऊपर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन डिवाइड बाय 3 माइनस 3 एप्सिलॉन होल क्यूब, और ये ऊपर आ जाएगा तो 4 माइनस 2 एप्सिलॉन होल क्यूब. सर स्क्वायर होना चाहिए 4 माइनस 2 स्क्वायर आएगा क्या? हाँ बराबर, ये स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा बराबर. यू राइट, बिकॉज ये स्क्वायर है तो 1 और 1 2 चला जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक 3 आउट हियर. यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया तुमने. 4 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन निकाला, 3 रेज़ टू पावर ऑफ 3 क्या हो जाएगा? इफ यू टेक 3 आउट 27. 27, एंड 4 माइनस 2 एप्सिलॉन होल स्क्वायर अपॉन, अब ये क्या बचेगा? 1 माइनस एप्सिलॉन बच जाएगा, तो 1 माइनस एप्सिलॉन रेज़ टू पावर ऑफ क्या हो जाएगा? 4. 4. So that is your second equation. ठीक है, so we have 2 equations. अपने पास प्रेशर चेंज करने का है, so we have to, a part is 1 is equal to 4, right? ky, so it is 2 into 10 raised to the power of minus 4 p square is equal to 4 epsilon square upon 27, 4 minus 2 epsilon whole square upon 1 minus epsilon raised to the power of 4. Now we need to solve this equation for A is P is equal to 20 bar, find out epsilon, and second is P equal to 200 bar, find out epsilon. Karo. You have a calculator, you can do this calculation, right? Find out the value of epsilon for P equal to 20 bar and P equal to 200 bar from equation 5. ठीक है, करो फटाफट करो. कर सकते हैं ना? प्रोग्रामर कैलकुलेटर होगा आप लोगों के पास, यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन. नहीं है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इक्वेशन को और सॉल्व करना पड़ेगा. है प्रोग्रामर कैलकुलेटर कितने लोगों के पास है? How many people have programmable calculator? Raise your hand. किसी के पास नहीं है क्या? अरे है कि नहीं है?
नहीं है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. That's why I'm asking you. If you don't have programmable calculator, then we have to simplify this equation. But manually करने का है फिर. हेलो, बहरे हो गए क्या? सुनाई दे रहा है? Yes, sir. है क्या कैलकुलेटर सबके पास? Yes, sir. तो मैंने बोला हाथ रेज करो, किसी ने हाथ रेज नहीं किया. किया है सर. दिख नहीं रहा मेरे को, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं. आई डोंट सी एनी हैंड्स रेज्ड. नेटवर्क इश्यू है क्या? नेटवर्क इश्यू तो नहीं दिख रहा है. ठीक है, करो कैलकुलेट फिर एप्सिलॉन का वैल्यूज. हो गया तो हाथ रेज करने का. Once you finish calculating for epsilon for 20 bar and 200 bar, raise your hands.
Devendra, can you hear me? Yes, sir. What is the answer? सर कैल्सी में ना कांट सॉल्व बता रहा है तो सिंपलीफाई करके सॉल्व कर रहा हूँ. अच्छा, ठीक है. इसीलिए पूछ रहा था मैं कि कैलकुलेटर नहीं है तो देन विल डू सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन हो गया क्या? उसको ओपन करना पड़ेगा पूरा टर्म्स को. सर बहुत बड़ी डिग्री आती है उसकी. नहीं, तो व्हाट कैसे? you have to do is 4 epsilon square into 4 minus 2 epsilon square क्या होता है? 16 minus 16 epsilon plus 4 epsilon square divided by 1 minus epsilon to the power of 4. वो क्या होता है? 1 minus epsilon to the power 4 क्या होता है? याद है किसी को फॉर्मूला? 1 minus 4 epsilon plus 6 epsilon square minus 4 epsilon cube plus epsilon raised to 4 1 minus 4 epsilon, रिपीट करो. plus 6 epsilon square और minus 4 epsilon cube plus epsilon raised to 4. ओके, ठीक है. सो उसको ओपन किया ऊपर वाले को तो what will get is
सर एप्सिलॉन का वैल्यू 0.038 आता है क्या? नहीं, एप्सिलॉन का वैल्यू 0.14 करीब आएगा। जीरो पॉइंट 1448 आ रहा होगा सर। यस, कैसे किया सॉल्व? सर डायरेक्ट कैलसी पे किया, आया मेरा। डायरेक्ट कैलकुलेटर में किया? यस सर। ओके, और किसी का आया कैलकुलेटर में? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे नहीं आ रहा करके। सर 1.855 आया कैलकुलेटर से। Epsilon is always less than 1, so it cannot be more than 1 because it is essentially conversion. Generally 1 less than 1 आता है एप्सिलॉन का वैल्यू। ओके ठीक है, ये घर पे करो, मैं भी ट्राई करता हूँ होता है कि विदाउट कैलकुलेटर। आई टेल यू टुमारो। ठीक है, 10 बज गया। आई विल कीप ट्राइंग मैन्युअली। यू ऑल्सो ट्राइड मैन्युअली एंड थ्रू कैलकुलेटर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट कर सकते हैं। एंड टुडे यू हैव अ टेस्ट एट 2 PM